Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the greatest value of the function fx equal to x into e power minus x in 0 to infinity is a b c d options given है हमारे पास. So first of all की concept क्या यूज करेंगे? की concept. Let us suppose y equals to fx, any function given है हमारे पास, greatest value find out करनी है. So first step क्या होगा? Find first derivative which is dy upon dx. Then next step क्या होगा? Put dy upon dx equals to 0. So from here हमारे पास x के कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाएंगे. Let us suppose a and b. Then third step क्या होगा? Find its double derivative which is d square y upon dx square. And if d square y upon dx square it is less than 0 at x equals to a, then value क्या आएगी हमारे पास? Then maximum value at x equals to a. So now इसके concept को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फंक्शन क्या गिवन हमारे पास? fx it is equal to x into e power minus x. ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे विच इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू माइनस वन प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू वन. So from here it is equal to take e power minus x common, remaining terms are minus x plus 1. So f dash x को equals to 0 put करेंगे next step में. So from here e power minus x और minus x plus 1 equals to 0. So from here we can say that e power minus x equals to 0 or 1 minus x equals to 0. So now from here 1 upon e power x equals to 0 और x equals to 1. So now 1 upon e power x equals to 0 से हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं आएगी because x approaches to infinity. So now वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? x equals to 1. Now second derivative find out करते हैं. f double dash x which is equal to f dash x क्या आया था हमारे पास? It is e power minus x into 1 minus x. So from here e power minus x as it is into derivative of 1 minus x plus 1 minus x as it is into derivative of e power minus x which is equal to e power minus x into minus 1 plus 1 minus x into e power minus x into minus 1. So from here it is equal to minus e power minus x minus 1 minus x into e power minus x which is equal to minus e power minus x minus e power minus x plus x into e power minus x. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एट x equals to 1 पे चेक करते हैं. So now f double dash x at x equals to 1, so it becomes f double dash 1 which is equal to minus e power minus 1 minus e power minus 1 plus 1 into e power minus 1. So from here it is equal to minus e power minus 1 minus e power minus 1 plus e power minus 1. So from here e power minus 1 and minus e power minus 1 cancel out हो जाएगा due to opposite sign. Remaining term is only minus e power minus 1 which is equal to minus 1 upon e which is less than 0. So now f double dash x हमारा क्या आ गया? less than 0 at x equals to 1 which means at x equals to 1 वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू. नाउ स्टेटमेंट चेक करते हैं. स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ग्रेटेस्ट वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू. फंक्शन क्या गिवन था उसमें पुट करते हैं. नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स. सो फ्रॉम हियर f1 which is equal to 1 into e power minus 1 which is equal to 1 upon e. So this is our final answer. Greatest value का आगे हमारे पास it is equal to 1 upon e. Now options के साथ मैच करते हैं. From given options, option B is the correct answer. I hope you all understand it well. Best of luck.